I was looking at people's LinkedIn profile, dude. They describe the entire life story. Like headline mein, there is supposedly some odd number of letters. Okay. And then people go like founder, builder, evangelist, helper, mentor, sales leader, and it goes on and on. You know, like Twitter is for journalists, really. Yeah. Politicians. And LinkedIn is for hustlers. It's like people who, a lot of them are just on their own, building a new business, and they're just using LinkedIn Sales Navigator. Freelancers, huh? All of them are freelancers are on Upwork and, But that's Fiverr. why they're generating the lead itself. Yep, but these are the guys who are either selling their expertise, like subject matter experts. So they're not like coders. They're more like... And that's exactly how I envisioned your company, even though I haven't visited yet. You should now. It's literally right across the road. Is it? Like literally walking distance. Like, please don't drive. Ab to main aa raha hu. Samne wali forum ki lane mein, that's where we moved. Acha, you've moved there. Yeah. Amazing, yaar. And group, like the way you have, the way you deal with people in large groups is quite an admirable thing to me. Like, I'm like, hey, skill main agar acquire kar lu na Hassan bhai ki. So, sir. What do you mean? Like, speeches, team building, in not an overt, like, let's do an exercise, guys, which I'm sure full of as well. But like team building in the way, the attitude you bring when you're in a group. I love that. That's a good energy. And we were even noticing as we were editing the Shimshal wala vlog, वहाँ पे जब रॉक ने भी कहा था ना हमारे पास भी बंदा है, बाकी सारी टीम्स ने अपना एक बंदा प्रेजेंट कर दिया था और हम जो कराची आइट थे हमारे पास बंदा नहीं था, and you came and you gave this wonderful speech. Very inspiring. I mean, I've done a lot of public speaking growing up. So I think my first speech to an audience, I think मैं 12 साल का था. Oh. 11 साल का था, maybe 12 साल का था. My dad, he's into sort of Urdu literature. He's written a few books, does a bit of poetry. And वो भी काफ़ी पूरी अपनी लाइफ जो है काफ़ी होस्ट करते रहे इवेंट्स को, और एक लफ्ज़ होता है कंपेयरिंग करते रहे. अच्छा. या जेनेटिक है. आई थिंक सो. तो वो उन्होंने मुझे शुरू में डाल दिया ना, मैं 5वीं 6वीं में था, तो ही वुड राइट द स्पीचेस और मैं रट्टे मारता था. रट्टे मारता था, ग्लास विंडोज़ के उसके सामने खड़े होकर मिरर के सामने रट्टे मारो. एंड फिर जाके आई वुड डू इट. आई वाज रियली गुड बिकॉज मेरी हाइट भी छोटी थी, अभी भी इतनी बड़ी नहीं है, पर उस वक्त और भी छोटी थी, तो मैं जाता था, आई वुड लुक लाइक अ 7 साल का बच्चा हु इज़ कमिंग इन एंड हु इज़ जस्ट लाइक taking over the audience as if he believed everything he said, and I had no idea what those words were because काफ़ी मुश्किल अल्फाज भी थे. और मैं हाथ हिला रहा हूँ और हम ले जाएंगे और तुम्हारे लिए पैदा हुए हैं. And I'm all animated. तो वहाँ से I think it started. फिर अब तो मैं इतनी नहीं करता, obviously टीम से कभी ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हो दोस्तों के साथ तो कभी मौका नहीं मिलता that kind of leadership audience. But it's a part of your personality, for sure. Like, it's like you bring it onto the table in any situation. और अगर सरोक को लगे कि अभी हमें एक बंदे की ज़रूरत है जो सबको पिघाल दे, तो we always have you as a weapon there. And tell me about SABAQ. यार edtech space के अंदर सबक पढ़ा है आपने अपना. बिल्कुल. तो एजुकेशन से तो ताल्लुक़ होगा इसका. एजुकेशन ही से ताल्लुक़ है, और it's something we started तकरीबन 6.5 years ago. 2015, like symbolically I like to now, in the company founding date, I like to write it as 14th August. But I don't know if it was 14th August, it was around August time. Around that time. Where, and then, whenever you start something, it's not कि जिस दिन आपने company register करवाई वो count होता है. Sometimes the ideation days and they may last for a long time. So वो weeks थे जिसमें मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि what's the next gig. So it was almost like my second inning. क्योंकि मैं 12 साल पहले एयरफोर्स में रह चुका हूँ एज एन ऑफिसर, तो इट वाज लाइक अ ह्यूज ट्रांजिशन. आई लेफ्ट द एयरफोर्स विदाउट हैविंग एनीथिंग सिक्योर, एंड ऑल आई हैड वाज दैट आई वांट टू डू समथिंग दैट शुड बी अ बिट मोर चैलेंजिंग एंड एम्बिशियस and had to do with impact, sort of giving back or just reaching out to a large audience, social enterprise. I don't know what it was. Like कोई idea नहीं था, बस ये था कि something that's just like rewarding, bigger than me. Internally rewarding, or something, in some way or the other. Yeah. Something that just because I was
really hungry for something like that. Or it was never about the money. It definitely is. I should say that. It is about the money, but it was always like, you know, ऐसा कुछ काम करे, काम भी अच्छा हो, पैसे भी बनाए. तो वो थोड़ा सा आइडिया था. और वो निकल के फिर literally I was just meeting people, just अच्छा अभी स्टार्टअप का ज़माना शुरू नहीं हुआ, राइट? लाइक उस वक्त सबसे बड़ी फंडिंग जो मिली थी इजी पैसा को मिली थी, और इजी पैसा ने रेस किया था, यू नो. सो लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप जो राइट नाउ दैट यू सी एंड हियर सो मेनी पीपल रेजिंग फंड्स, उस ज़माने में वो काफ़ी लिमिटेड थे. 1-2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हुई थी. आई नो पटारी की इन्वेस्टमेंट हुई थी $500,000 की, तो दैट वाज कंसिडर्ड बिग. और अभी कल $17.5 million की प्री सीड हुई है, यू नो. सो प्रोडक्ट भी तैयार नहीं है. सो थिंग्स हैव चेंज्ड. तो उस ज़माने में बट आइडिया ये था कि maybe we get to a point where we raise investment, grow something, do something at scale using technology. So a friend of mine I met with and was having conversations with, उन्होंने मुझे किताब दी एक दिन, और वो किताब उन्होंने बड़ी अच्छी किताब है यार, पढ़ना एजुकेशन पे है. अच्छा, I knew the guy. So सलमान खान की किताब थी, obviously not the actor, not सलमान खान the actor. सल्लू भाई नहीं थे. Khan Academy wala Salman. Oh yeah, wonderful guy. So I was following him since 2006 and 7 when he first started doing his YouTube channel, not even Khan Academy website. So वो किसी ने दिया. The book was One World Tree House. I just picked it up. सुबह के 10 बजे थे. मैं शारा फैसल कराची के जो डंकिन ओनर से वहाँ पे जाके बैठ गया एंड ऐसे पढ़ना शुरू कर दी. And I kid you not, I have not spent that much time reading, and one day I got up when they were closing the shop and I almost finished the book. So 12 hours straight sitting, ordered 3-4 coffees, just reading. And it was about him imagining how can we scale education with mastery, you know, globally. So there are काफ़ी सारे words हैं. Scale is a word where meaning you do it at hundreds of thousands of millions. Mastery is a concept which means if you master a topic only then you move forward. So हम typically क्या करते हैं स्कूल में 50% पे OG पास हो गया. Would you lie in front of a doctor for surgery knowing that he or she only knows 50% of the material? I wouldn't. Would you? No. So why do we trust students to be pushed forward for the next grade? Just validating they only know up to 50%. That means successively, if that's what you keep doing, if your curriculum size is big, by the time you get to college, you perhaps know 10% of it. So वो idea है which everybody follows. So Khan Academy's vision was to get to mastery. Mastery is meaning 100%, 90%, nothing less. You know, like super close to knowing everything. And then you let people move forward to the next level of learning. So how can we do the scaling bit and also the mastery bit. So वो idea बड़ा crazy था. ये मेयार of तालीम पे dependent है ना, mastery. मेयार तालीम ही पे dependent है, learners के engagement पे dependent है, किस तरीके से sequencing हुई हुई है content की, किस skill को पहले पढ़ाना है, किसको बाद में पढ़ाना है, scaffolding learning की कैसी हुई हुई है, learning levels कितने achieve किए हैं, मतलब काफ़ी सारी dimension है. Interesting. But the idea is that you demonstrate कि भाई आप जीते हो, and then we let you move forward. और ये हो सकता है टेक्नोलॉजी में, because Instagram में भी आप यही करते हो, you go from a video to video, and if you've seen 8 or 10 videos of a particular topic, that's what you get to see for the next few weeks. You're the prisoner of your own selection. So because technology can do that, technology can keep record memories of all interactions since forever, till forever, right? So you don't forget anything. That means her choice is gonna decide your next destiny. Something similar to what they discussed in Westworld season 3, by the way. Ooh, I haven't seen it. Yeah, it's very good. So good. Is it? Yeah. I hear, I've been seeing some articles going around. It's very good. I mean, I'm a fan of this kind of thinking, so maybe there is that bias, but yes. So we went from Ed to all of a sudden Westworld, which is... So we went from choices. We went from mastery. Okay, how do you get to mastery? You can help a student master a topic if... you know every previous mistake he or she made or every previous success he or she demonstrated. So you can make sure that they get to see what's the next level of learning for them, so they can master it. It's not too hard, it's not too easy that they get bored. Okay. So mastery technology is aise aati. That's what I was trying to get to. Okay, interesting. And I got that idea from Salman Khan. Okay. So I said, that's what I'm going to get to. There is technology, AI is coming. There is a lot of big data talk about analytics and user preferences. You can customize the experience. So we can customize learning. We don't have to send all the kids who are age 12, age 11,
कि भाई अब तुम 11 साल के हो गए, अब तुम्हारा 7वीं जाने का टाइम है। क्यों भाई, मैं तैयार नहीं हूँ मैथ में, या मैं लिटरेचर में बिहाइंड हूँ, मेरी रीडिंग अच्छी नहीं है, मेरे साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे 10वीं के साथ बैठना चाहिए। So this kind of concept is not possible in a traditional classroom, because this model was the current classroom model was built, at the beginning of the Industrial Revolution. Yeah. Specifically in Germany. There's a set curriculum for each stage of learning, and there's an inflexibility of the type of education through which children are taught. Everybody is taught reading and writing and math and science. हाँ, वेरिएबिलिटी की, लेकिन वेरिएबिलिटी क्रिएट किस तरह कर सकते हो? स्केल करना है ना। अच्छा, so you saw the scaling in technology. In a classroom you can only send, scale पे नहीं कर सकते ना आप। कैसे मैनेज करोगे कि 50,000 बच्चे हैं, उनमें से AI के 12 साल के, but you'll have to send them physically to the different classroom, the logistics of managing all of that. अच्छा, physical है भी। Okay. So I thought tech के through it would become remote in some sense. I'm saying so that's what I thought you could do with tech. You could with tech on mobile phones, you could do that kind of customization and that kind of scaling. Interesting. So that was the idea. But didn't know anything about education, was never a teacher, really. Didn't know about curriculum, didn't know the difference between curriculum and syllabus. And I'm sure even you don't know that. I don't know this. No, I don't know this. So a lot of people say, I'll tell you what big mistakes people make in education. Big teachers, you ask a teacher, अच्छा तो आप लोग इंग्लिश का क्या करिकुलम है? ओ, इंग्लिश का हमारा करिकुलम बड़ा ज़बरदस्त है, अभी हमने बुक्स ली हैं सिंगापुर से. What the hell is this? So curriculum has nothing to do with your books. So curriculum is basically, it's like a national standard or a regional standard. In the US, हर district का अपना curriculum हो सकता है, state level अलग है. So it's what you expect your next generation to know. Okay. So they set these learning standards. के math में we want them by grade 7, we want them to have these skills. We want them to be able to do multi-digit multiplication with decimals. Great. सही है. तो okay, we can do that in grade 5 क्योंकि हमने single digit multiplication with digits किया हुआ है, तो now that's the next skill. So ये जो sequence of learning है, ये जो learning standards है, that's the curriculum, and that's set at the national level stage. Okay. So you follow that curriculum, and then people who want to do standardized testing, or schools who do examination up until grade 8, so because they do the examination, so they come up with a syllabus. Okay, that's the curriculum, and we will skip a few points in grade 7, we'll cover them in grade 8. So that allows for somebody to be a bit selective कि अपना content कैसे design करना है. तो वो syllabus आ जाता है, and then books are published for that syllabus. तो एक आपका national board है जो आपका curriculum set करेगा, और फिर आपकी individual educational institutions जो हैं उसके फर्क syllabuses execute कर रही होंगी so as to meet by the end of it some get final to the same standard. curriculum. Yeah. So curriculum is typically not what schools are picking. Schools have to follow the national curriculum. Oh, they have. Yeah. So they are mostly like we picking. have to study Pak studies in Pakistan. You have to. And you have to study US history in America. Yes, I think so. I mean, I didn't do high school. So. High school, yes. I did 1 year. I just studied a little bit of US history. I studied a little bit of US history too, by the way, because I was in the US military. So I had to study in America. In the US. Oh, Kamal, that's a better feeling. I was sitting here in an American school. No, that's sad. Like, this is an artificially simulated environment of what an American place looks like. So they were looking for a new place, the new world they called it, until they called it the US. Yeah. So I was there with all the Americans learning about the American history. So yeah, it didn't stick with me for some reason because I don't have that much conversation about US history with people here in Pakistan. We end up हम पाकिस्तानी हिस्ट्री की बात पे रह जाते हैं ना, कि कराची की हिस्ट्री वो ही नहीं अभी पता मुझे. कराची की हिस्ट्री वैसे मुझे भी नहीं पता, सैडली. ये सैड है. It was मच्छेरों का एक छोटा सा आबादी थी, इलाका था. फिर उन्होंने गोरों ने कंटोनमेंट्स बनाए, एंड आई थिंक हाँ, Napier had something to do with it. Napier was in there. Saint Napier. Slowly from that idea from Salman Khan, what's the final execution you get to? So execution we get through a journey, and which still continues. Immediately what we got to, so I looked at Sesame Street as an inspiration and felt, stories always are exciting for kids. If you could sort of visualize it, animate it, and if you can
package it in a video inside an app, and then you distribute it to every child in Pakistan and or schools, and then they would want to watch and learn. So the idea was to how to teach science and math, using everyday ideas or everyday situations. तो एक छोटी सी एग्जाम्पल है उसमें हमारे एक लेसन की, and these are all cartoons, right? These are all 2D cartoons, all characters, everything animated. Are they copyrighted or can I just put them up on the screen right now? You can put them up. You can put some of them up from our YouTube channel. There you'll be seeing them right now. So the idea was कि हम visualize करवाएं, गाने भी डालें, बच्चों की characters हों और एनिमेशन से बच्चों को पढ़ाएं. छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे एक हमारी वीडियो है जिसमें एक फार्मर है, उसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है. तो अंडों का उसका वो है फार्म, और समझ नहीं आ रहा कि कितनी मुर्गियां चाहिए उतने अंडे प्रोड्यूस करने के लिए एक महीने में. ही वांट्स टू स्केल इस प्रोडक्शन. तो उनकी बेटी आती है, स्पेशली बेटी. हमने काफ़ी सारे उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, जो सॉर्ट ऑफ इन मॉडल कैरेक्टर है, वो बच्चों के लिए उसमें लड़कियों को डाला टू ऑल्सो सबकॉन्शियसली इनकरेज गर्ल्स एजुकेशन. तो वहाँ पे बच्ची आती है, वो कहती है, वो बाबा ये तो मैं 2 मिनट में कर सकती हूँ. फिर वो निकालती कॉपी पेंसिल पे सॉल्व करती है और देख लेती है कि अगर एक्स अमाउंट ऑफ मुझे अंडे चाहिए और एक मुर्गी एक दिन में एक अंडे देती है, तो 30 दिनों में 30 मुर्गी इतने अंडे देंगी. तो 1500 अगर अंडे मुझे हर महीने चाहिए, तो मुझे इतनी मुर्गी डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके वो प्रोसेस दिखाते हैं. उसको नीचे लिखो, उसके ऊपर लिखो, ये कैरी फॉरवर्ड करो, ये ऐड करो. तो मैथ भी सिखा दिया आपने, और बच्चों को एग्जैक्टली यूज़ भी समझ में आ गया कि अच्छा मल्टीप्लिकेशन का एक्चुअल एवरीडे लाइफ में यूज़ है, ये सिर्फ क्लासरूम के लिए नहीं. तो इस तरह के मैसेजेस हैं. वी प्रोड्यूस्ड हंड्रेड्स ऑफ देम एंड देन टुक देम टू ओवर 2000 स्कूल्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान. तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा बच्चे डायरेक्टली एक्टिवली उससे सीख चुके हैं. फिर यूट्यूब पे अलग है ऑडियंस, और PTV पे एक चैनल लॉन्च हुआ था कोविड के स्टार्ट पे, टेलीस्कूल. इफ़ यू एवर saw or heard about it. It was a 18-hour school live on television, and federal government के साथ there were just 4 companies जो कि जिनकी वजह से वो चैनल सेटअप हुआ था. तो हम उसमें से एक कंपनी थे. हमने अपनी सारा एनिमेटेड कंटेंट with a lot of investment and How many IP. hours of this is content? It's hundreds of hours. It's more than 1,000 videos on all content topics on math, science, English, Urdu, kindergarten to grade 5. Grade 5. Yes. Oof, that's a lot of content. A lot of content. The big factory you must have had to make to actually get how much time did it take to produce all this content? 3 to 4 years. 3 to 4 years. And we keep making new content, but now at a relatively slower pace. उससे पहले एक टाइम था कि हम बहुत Grade 6 onwards की डिमांड नहीं है. या Grade 6 onwards की डिमांड है. उसके पीछे भी एक philosophy है. वो philosophy ये है कि जो initial मेरा idea था, looking back, if I could go back and change, I would. So the same motivation is not the same, because I've learned so much from the people, from the context, that I don't think, making sure that every child successfully passes grade 5 is such a fundamental objective. I think दुनिया चेंज हो रही है, अब करिकुलम इतना इफेक्टिव नहीं है, तो वो अलग रीजंस हैं. बट शुरू में बस ये था कि 5वीं पास करानी है, क्योंकि 5वीं पास इज़ सॉर्ट ऑफ अ ग्लोबल स्टैंडर्ड कि आप लिटरेसी है, पढ़ सकते हैं, आप छोटी सी मैथ कर सकते हैं. अगर आप नहीं भी कंटिन्यू करते स्कूल, 5वीं पास करा दो. सो 5वीं पास कराना वो सॉर्ट ऑफ द मिशन दैट वी हैड, एंड वी वांटेड टू गेट टू 10-20 लाख बच्चे इन 4 to 5 years. And we didn't get to 10 lakh. I mean, we got to 60 lakh bache, if you count our federal government and PTV collaboration. But through our app, we got to, and then schools, we got to about 500,000 who continue to use and learned it over a year or more. So that number is, education curriculums don't change that often, so you don't need to redo it that much. 2006 का curriculum चला है until single national curriculum last year. 14 years. ये वैसे उससे कुछ हुआ है आपको? कुछ चेंजेस करने पड़े? हमारा पूरा कंटेंट नेशनल करिकुलम काउंसिल के पास गया था. 4 दिन लगा के उन्होंने रिव्यू किया, और माशाल्लाह से उन्होंने ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर कंटेंट अप्रूव कर दिया विद आई न्यू गैप्स. तो दे सेड इन इंग्लिश एंड अ कपल ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, ये कुछ करिकुलम के टॉपिक्स हैं जो आपने कवर नहीं किए, तो आप इनको भी कवर करें, इनका भी, तब आपका कोहेसिव हो जाएगा. हमारा प्रोग्राम भी फेडरल गवर्नमेंट के इस्लामाबाद स्कूल्स में रन हो रहा है. 80 क्लासरूम्स में हमने ब्लेंडेड लर्निंग इंट्रोड्यूस करवाई है इन गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पे LED TV हैं. हमने ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे हैं, और LED TV भी लगा हुआ है, टीचर भी पढ़ा रही है, वाइट बोर्ड भी है, LED TV भी है. और जब टेस्ट का टाइम आता है तो बच्चों के पास छोटा सा
क्लिकर भी आ जाता है, वो क्लिक करते हैं, हर बच्चे का डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू, यू नीड सेपरेट डिवाइस, बट हम 2,000-1,800 रुपये का क्लिकर होता है, हर बच्चे को एक दे दिया, उसमें से वो क्लिक कर रहा है, उसका डेटा हर टेस्ट पे 5वीं जमात 4थी जमात में गवर्नमेंट स्कूल में हर टेस्ट पे डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, इमेजिन दैट, कमाल। हर टेस्ट का मैनुअली तो बड़े बड़े स्कूल्स में रिकॉर्ड होता है, फिर कंप्यूटर में फीड होता है, सो दिस कुड हैपन डायरेक्टली फ्रॉम द क्लिकर। व्हाट कैन यू गेट आउट ऑफ दिस डेटा? सो पाकिस्तान में वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज इज़ के वी डोंट हैव वेरी सॉलिड टेस्टिंग डेटा ऑफ स्टूडेंट्स। जब भी हमारे जो टेस्ट कोर्स हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ यू कैन रियली सिंक देम एंड अलाइन देम, सो टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स बहुत पुअर हैं, और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पिछले 20 सालों में किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर जो एजुकेशन है वो मूव अवे कर रहा है फ्रॉम गवर्नमेंट टेस्टिंग टू ओ लेवल्स, ए लेवल्स, बिकॉज दे डोंट रियली बिलीव इन द टेस्टिंग, दे सेंड टू द सेम schools are the same, is just that एग्जामिनेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं। सो एग्जामिनेशन अच्छी नहीं होगी, टेस्ट अच्छा नहीं होगा, तो आप कैसे बच्चों को अच्छी इम्प्रूव्ड लर्निंग दे सकते हैं, तो वो क्लिकर्स के ये फ़ायदा है। तो इस लिहाज से वो जो आइडिया था, जो ये क्लिकर क्या कर रहा है, ये क्लिकर किस तरह, क्या इट्स जस्ट रिकॉर्डिंग अ क्लिक? इट्स रिकॉर्डिंग, सवाल आया, अपीयर हुआ कि पाकिस्तान के झंडे में कितने रंग हैं। सो एक MCQ आया 2, एक आया 3, एक आया 1। अब जो सही जवाब है वो 2 है, तो मैं बच्चा हूँ, मैंने 2 क्लिक किया, आपने 1 क्लिक किया, अब आपका गलत हो गया, अब मेरे पास वो डेटा डेवलप हो रहा है वीकली बेसिस के ऊपर। समझ गया। तो वो सरकारी स्कूल में यू डोंट इमेजिन दैट, राइट? तो दैट काइंड ऑफ वर्क वी आर डूइंग राइट नाउ इन इस्लामाबाद। इन ऑल द 60 ऑफ देम और 80 ऑफ देम? 80 क्लासरूम्स इस्लामाबाद के अराउंड में और शहर में जो सरकारी स्कूल्स हैं। दिस हेल्प्स यू get just the testing information of a child as they're answering MCQs वगैरह, और क्लिकर जो है वो आपको पूरी लिखाई तो नहीं उसमें आ सकती, it's a binary input type ना? हाँ, multiple choice, true and false. हाँ, और multiple choice वैसे भी they test pretty well, right? Multiple choices in does the person actually know the answer कि वो गलती से जो क्लिक कर रहा है, या at random if he can click out of those four options. MCQs are pretty tested and tried and they've been around for years. MCQs are tested and tried, true and false are tested and tried, but they can only test a certain level of learning on the Bloom's taxonomy. So Bloom's taxonomy is a very popular concept जो कि ये बताता है कि आपको एक चीज़ पता है, but आपको वो किस mental process के हवाले से पता है। मसलन आपको ये fact पता है कि दुनिया में 7 continents हैं, या आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पता है। सो यू स्टार्ट ऑफ विद बेसिक फैक्चुअल टेस्टिंग एंड देन यू गेट टू हायर लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, सो जिसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड करने की स्किल आ जाती है, फिर कंपैरेटिव स्किल आ जाती है, और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है वो है इवैल्यूएटिव। ओके, सो मेकिंग एन evaluation really requires a very high level of thinking versus just knowing about a problem. हाँ. So you get to in multiple choice you can test that, but as you go into higher grades, जैसे Cambridge में A levels में O levels में, so one of their testing objectives या learning objectives are to be able to do evaluative thinking, and they have a certain percentage assigned to a certain number of questions from the entire testing of 2 levels of A2s. तो वो certain percentage होती है, उन्हीं को A मिलता है who do really well at the highest level of thinking. So multiple choice से आप वो कर सकते हो, but you need to be able to describe or evaluate a process. So at higher levels of, at least for English and social sciences के topics. Yeah. Maybe with math you can still do a lot of evaluative with just ABCD के options. तो ये उससे इस तरह का data मिलता है. That's so interesting. I was thinking that's life. As you keep growing, you just gather more and more little bits of information that end up making a bigger piece of information. Like this watch, the Phoenix has this thing called the body. The famous Phoenix. The Garmin की जो Phoenix 7 Solar Sapphire है. मुझे अभी तक डेटा नहीं मिला इससे, by the way. वो मैं क्या करूँ कि जब मैंने इसको अपलोड किया Strava पे, तो मैंने अपने अकाउंट को प्राइवेट किया हुआ था कि कोई मेरा मैप ना देख सके. तो उसके बाद वो उस चीज़ के लिए वो प्राइवेट ही रहेगी कि आई कांट समहाउ शेयर इट विद यू. एवर सिंस दैट मैंने बहुत सी स्ट्रावा की वो चीज़ वो ज्वाइन लोगों को मैं भेज सकता हूँ पूरा. आई कैन मेक देम ज्वाइन द एक्टिविटी. मगर दिस वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट इट हैज़, एंड समहाउ इट लिंक्स टू दिस, आई प्रॉमिस यू व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, द बॉडी बैटरी
This is a piece of information that takes a lot of little bits of data. कि मेरे हार्ट रेट से, मेरे स्लीप टाइम से, मेरे स्ट्रेस लेवल से, जो कि हार्ट रेट और क्या कहते हैं एक्टिविटी से एक इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट होता है स्ट्रेस लेवल भी, बिकॉज इट कांट रियली गेट द कोर्टिसोल लेवल्स ऑन दिस वॉच. सो इट्स all of these big small pieces of data combined to make the body battery, which is something very easily understandable, bit of information that you can easily understand. You look at your phone, you're like, अच्छा 40% रहेगी, ठीक है, चार्ज कर लूँगा थोड़ी देर में. Charging means सो जा. Oh, no amount of food, nutrition, yoga. If I wake up in the morning, sometimes it's 100%, sometimes it's 98%, but if I'm having आराम से कुछ चाय पी रहा हूँ ना, तो बढ़ जाता है, खुद ही बढ़ जाता है. So I don't know what the hell was happening there. What bit of information data did this take? Heart rate, if it's slowed down, because lying down typically you get to your resting heart rate, so maybe with that. Yeah, and it's doing this, and it's called the body battery. It's very interesting. What's the body battery percentage right now? It's right now it's 47%. बहुत है. हाँ, midnight तक चलने वाला. ऐसा ना कि podcast के बीच में सो रहे हो मुरू भाई. But anyways, you were saying body evaluative is the last way. The highest level of thinking. Highest level of thinking that you can assess. I'm sure everybody has, this multi-intelligence theory. Everybody has, some part of their body that obviously can be developed to the highest potential. Like just assuming that genetic lottery में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े outliers नहीं हैं. Like बड़ी जो bell curve है वो फैला हुआ नहीं है, outliers ज़्यादा नहीं, सबकी तकरीबन बराबर का ही है. ठीक है, आपको ज़्यादा language मिल गई, मुझे visual thinking मिल गई, ये अलग बात है. Not everybody gets to develop because of the opportunity, but तो assuming that अगर आप हर किसी की अच्छी परफॉर्मेंस होगी on a particular skill at that evaluative level. That's what I'm trying to say. Sadly हमारे topics की limitation है in terms of what we test. Everybody is expected to do well with language and with math. That's the foundation. But then now people are talking about physical intelligence. People are talking about psychological things and things that are not just sort of so deeply rooted in math and language that otherwise you can't develop. Yes, to become an artist, you do need a certain level of education, but then if you just have that skill, but you're really terrible at something, you might just struggle in the early years. And so much pressure on you that you might not even be able to explore your creative side. So many artists are born, we never get to discover them. ये भी सिलसिला है. Yeah. Or so many artists are born and their potential is not realized. No potential not realized. That's just the... Because पता नहीं उसे मैथ पे डंडे पड़े होंगे शुरू में, नहीं हो रहा होगा बेचारे से. ग्रेड 1 और 2 में तो वो पहले ड्राइंग करता होगा, फिर उसने ड्राइंग को मचोड़ के डस्टबिन में डाल दिया एक दिन के, this thing is not helping me, I'm supposed to do well at math, and then he struggled all his way और बेचारा रह गया. I also felt like fathers want their sons to be like them, and that can sometimes be limiting. Like अगर let's say आपके वालिद साहब इंजीनियर हैं तो वो कहेंगे मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा. हम बड़े होके इकट्ठे ना इंजीनियरिंग की बातें किया करेंगे, इलेक्ट्रिकल बातें करेंगे, शायद maybe we'll invent something together, like you'll have these dreams. So they'll plant this, and I am sure मैं जब अगर मेरा कभी बच्चा होता है ज़िंदगी में तो मैं भी वो चाहूँगा कि आर्टिस्ट बन जाए. I can tell him how to write a song much faster than it took me to fucking learn, because I don't have my father didn't write songs. So it's just within the family, bro. I got this information. I learned it from trial and error. Much later. हम तुझे 6 साल में सिखा. मैं तुझे सिखा दूंगा. तू 11 साल की उम्र में जरा बीबर बनने की कोशिश तो जरूर करना थोड़ा, But so when they do that, parents generally, I'm assuming a lot of them do, mine did to a certain degree as well, or even society in a general thing would be like हम curriculum के ज़रिए उन चीज़ों को सिखाना चाह रहे हैं समाज को जिसके ज़रिए हम कोई समाज की पैदावारी और बढ़ा सकें. कि मैथ के ज़रिए हम आजकल जो है पूरी मंडियाँ चला रहे हैं, तो मैथ सिखा दो उसको, तो समाज भी ये रिक्वायरमेंट पेश करती है. ख़ानदान अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ इम्पोज करते हैं और छापते हैं और इंसान के ऊपर प्रिंट होता जाता है over all these years, and they become something that is partly genetic and partly not, I suppose, partly societal. Societal तो है ना, because जिन skills की अभी हमने बात की कि
productive कैसे होना है किसी शख्स को. So this all started with the Industrial Revolution, where you wanted people to be able to do the jobs in the factory, and that required communication language, and that required a little bit of math. So from the get-go, the Industrial Revolution really created this bias where we feel that language and math are the core skills for human progress. And that's the first thing you teach them. If they learn nothing else, that's the first thing. But maybe that's why we're doing killing the planet. Oh my because, God. Maybe you believe in climate change? Building emotional awareness, as important as language. In the early years, you develop that, right? And then resilience and patience and things that make you, sort of like become a better person, as opposed to become a better factory worker that language and math would do. So that's why the curriculum was designed with that objective in mind. So आज की दुनिया में तो वैसे ही irrelevant है. आज की दुनिया में तो इतनी democratization है through technology that you really believe that billions of people might be able to do, they all have a lot more access, more freedom. People can learn on their own. There's so much to learn. तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी चांस नहीं मिला. पहले अगर opportunities 10-15% की थी to go to Ivy League school or to learn from the best. Now 95% have that चलो 95% access to of the information तो है. 95% of the broadband access वालों के पास access. हाँ. इतना तो पहुंच गया नहीं है और वो सर्टिफिकेट नहीं है. वो नहीं है, बट चलो थोड़ी अपॉर्चुनिटी तो है ना सीखने की. हाँ ये है. तो उसको दिमाग में रखते हुए अब maybe we have to rethink the structure of learning from the foundation years, from kindergarten. भाई कॉलेज लेवल पे तो मल्टीपल ऑप्शंस आ गए ना. 4-year डिग्री की बजाय अब पीपल आर गोइंग फॉर 9 months skills because skills are paying just as much as a college graduate. So लोग कोडिंग स्किल्स सीख रहे हैं, लोग एनालिटिक्स सीख रहे हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस सीख रहे हैं, एंड देन 6 to 9 months में दे मेकिंग जस्ट एज मच 80% ऑफ व्हाट समबडी हु स्पेंड्स 5 years इन कॉलेज डिड. तो ये चीज़ इसलिए भी आ रही है बिकॉज इतना एक्सेस बढ़ गया है. So people are looking at other options, and we should look at other options other than language and math. Yeah. As the starting foundation. So how did we departed from SABAQ at some point? So testing and evaluative learning. So that's where we're at, and you got trusted partners of federal and provincial governments for blended learning solutions. Moonshot Animations. I thought it was also SABAQ Animations for some reason till it was. We don't know when the transition happened. But it became Moonshot at some point. It became... Because you were SABAQ to me, I remember. Like Hassan SABAQ. It's like, that's not my second name. I'm not SABAQ. As I said, that was the idea ना जब शुरू किया था. Initial journey तो बच्चों को पढ़ाने की थी. वो किसी हद तक कभी भी कंटिन्यू कर रही है. बट उसमें हमने फील किया कि एटलीस्ट मैंने पर्सनली बड़ा फील किया कि मैं चाहता था शायद ज़्यादा, या हमारे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों की पहली ज़रूरत 5वीं जमात पास करना है, और बच्चों को 5वीं पढ़ाएंगे तो फिर स्कूल में कंटिन्यू करेंगे. बट नाउ आई रियलाइज कि दैट्स मे बी नॉट व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे नीड आल्सो. वो एक अलग डिस्कशन है. इफ़ यू वांट टू गो वी कैन कम टू इट. या व्हाई नॉट. फिर वो मूनशॉट वाली बात रह. चलो मूनशॉट पे पहले आ जाते हैं. हाँ. तो फिर कोविड भी आया. कोविड की वजह से काफ़ी सारे जो हमारे प्रोजेक्ट्स है, बिकॉज वी कमर्शियली वी वर नॉट सस्टेनेबल, बिकॉज वी वर ऑब्वियसली इट्स अ सोशल एंटरप्राइज बट ट्राइंग टू रीच टू द मार्जिनलाइज. तो वो बिजनेस मॉडल डेवलप करना डिफिकल्ट होता है. एटलीस्ट अर्ली ऑन तो नहीं होता. यू नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वी डिडंट हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो वी वर सॉर्ट ऑफ पिवटिंग फ्रॉम अ कपल ऑफ इनिशियल आइडियाज़. कोविड आ गया, जो हमारे थोड़ी फंडिंग स्ट्रीम्स थी, रेवेन्यू हिट हुआ, बहुत सिचुएशन ख़राब हो गई. तो वी started producing a different kind of animated content that we could put up on YouTube. So that was more like 3D, kids rhymes, kids songs. तो वो बनाने में हमने skill develop की of improving the animation skills. I invested in some new people coming in, training and then learning, just doing side projects, doing experiments. So COVID के बाद क्या हुआ कि हमारा animation services का एक vertical setup हो गया, which was exporting services of
2D design, animation, 3D animation design. That's where you made asset that development. crane thing that you were telling me about. Yeah. With the various moving parts, lots mechanical. lots of arms, yeah. Yeah. So वो हुआ, so COVID में we looked at that, we found a couple of good clients, and thankfully उनके साथ, you know, things are getting better, we're improving our production quality, targets, constantly adding new people, investing in training. So suddenly 90-80% of the company is now into animation services. So for that we sort of created a spin-off company, which is Moonshot Animations. So it's sort of the offshoot that doesn't do edtech, but it does animation for exports. And then given the export situation, that's sort of a new mission that I have now. I'm now after dollar chada hai. नहीं वो चढ़ना अलग है, but that's now I'm getting motivated about this thing about exports and like becoming competitive globally. So जैसे मेरा education वाला एक noble cause वाला idea था, इसमें I really now look at this Moonshot division as an opportunity to do well for the country, because I think what we really need is some level of global competitiveness, because we're मतलब आपके super काफी unproductive. ऐसे अमाल हैं जो आपकी मुहिब्बल वतनी से निकलते हैं, मतलब थोड़े से। पाकिस्तान यार का कुछ तो कर ले। जिंदाबाद. Yeah, but is that how you find you're a patriotic person, like you find a lot of. Yeah, there you is that came back to identity. Pakistan. I came back to Pakistan. I mean, the whole idea nation state, I mean, I know I can think beyond that. And if you want to have a discussion about what's our place in the world, what's the best thing we can do, then is it really staying within your own group, the in-group, out-group philosophy? Do you do that? Where do you draw the borders? So from that global perspective, ऐसा नहीं है कि only for Pakistan, not for everybody else. But एक क्लोजर कम्युनिटी का तो इफेक्ट होता है ना, हम रहते हैं, एक आइडेंटिटी है, इतना पाक स्टडीज़ पढ़ा है थोड़ा सा तो थोड़ा वो एक इफेक्ट है कि अपनी आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ करें, लाइक अपने लोगों को भी लाइक बाहर के लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टे अब्रॉड, 4 साल मैंने वहाँ 5 साल पढ़ा भी, तो ऑब्वियसली यू कम बैक एंड यूर लाइक शिट मैन, आगे पीछे लोग आई एम शिट और आई एम बिकमिंग शिट बिकॉज एवरीबडी इज सो शिट. ये भी होता है, तो मयार करने लगता है, मयार यू वांट बट एक्सपोर्ट के जरिए आप ग्लोबल जब मयार पे आ रहे हैं तो आई गेस यू आर हैंगिंग आउट विद द बिग गाइज, राइट? सो एंड इफ यू कैन डू वेल, ब्रिंग इन सम डॉलर्स. Yes. Keep Pakistan from going Diwaliya. Try to bring the money, rupee back up. किधर है boy तेरे dollars? You gotta do billions of dollars right now to get that rupee back up, man. Inject it. अभी IMF के वो wait कर रहे हैं कि inject हो जाएं. I keep reading कि 1.2. 1.2 bill. 1.2 bill is nothing. Right? You know, Pakistan is fundamentally just standing on a very weak footing. And it's not just a few months. It's over the next whatever years you have. Unless we do something fundamentally different from what we are doing now. Structurally things are so bad कि कोई चांस नहीं है, हमारे ये साइकिल ख़त्म नहीं होने वाला. Makes you wonder whether you made the right decision of shifting back. I also had basically when I graduated, तो मुझे कौम परस्ती से ना एक इशू है कि मतलब वो वहाँ पे बाहर भी अगर मेरे से कोई पूछता था कि आप किधर से हैं, तो अगर उसको पाकिस्तान नहीं समझ आती थी ना तो मैं कहता था मैं इंडिया से हूँ. हाँ सही है, ठीक है. थोड़ी देर पहले ही अभी तो हमने दीवार खड़ी की है, अभी दीवार खड़ी की है यहाँ पे तो मुझे वो नहीं था कि कभी मैं अपनी नस्ल से कोई बहुत ही कोई फ़ख्र रखने वाला इंसान हूँ या कौम से कोई मेरे बड़े कोई पाकिस्तान जिंदाबाद हूँ. मुझे कहता गलत चीज़ें भी नज़र आती हैं, अच्छी चीज़ें भी नज़र आती हैं. बट जब कॉलेज पढ़ने के बाद मेरा वहाँ पे रहने का दिल ही नहीं किया ना, कि फॉर सम रीज़न कोई मान ही नहीं मिलता वहाँ पे जाके कुछ करने का, क्योंकि वहाँ पे हो रहा है, उधर ज़रूरत नहीं है. और आप जिधर के हो आप उधर से, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड ब्रेन ड्रेन बिकॉज आई सो मेनी फ्रेंड्स आई नो जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं और वो अपने लिए अच्छा कर रहे हैं. तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई. हाँ, लेकिन शायद वो अपने लिए खाली अच्छा कर रहे हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं, लाइक दे नॉट सेंडिंग एनी ऑफ द मनी बैक, दे जस्ट. अच्छा वो तुम्हारे वाले नहीं दे रहे, बट जनरली तो एक्सपर्ट्स तो बहुत पैसे देते हैं यार. भेजते तो हैं यार, जितनी एक्सपोर्ट्स हैं ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एक्सपोर्ट अमाउंट तो एक्सपर्ट्स ही भेज देते हैं. तो मुझे लगता है इन लोगों को वोट देने की इजाज़त होनी चाहिए. हाँ होनी चाहिए 100%. कितने भेज रहे हो वापस अपनी 50% अगर अपनी सैलरी भेज देना वापस फिर ठीक है. 50% तो जहाँ रहते हैं वहाँ टैक्स भी तो देते हैं. वो भी है, वो वहाँ टैक्स देते हैं यहाँ के टैक्स देने से बचने के लिए.
और कई दफ़ा वो अपनी I mean दे देनी चाहिए इजाज़त just because they have a passport. That's it, right? Or an ICOP even. Now that's a question. अब पासपोर्ट होल्डर्स को दें बाहर रहने वाले या नाइकॉप होल्डर्स को दें, वहाँ पे यू कैन ड्रॉ लाइन. आई थिंक नाइकॉप वालों को नहीं होना चाहिए बिकॉज दैट्स मोर लाइक अ रेजिडेंसी, और यूएस में भी नहीं होती. बट पासपोर्ट होल्डर तो आई थिंक दैट्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ ओनरशिप, राइट? ये ज़रा फर्स्ट रो वाले हैं. लेकिन हमें वी डोंट हैव टू गिव अप आवर पासपोर्ट अगर हमारे पास एक और मुल्क का पासपोर्ट हो. No, I think you have to. You have to. अगर मेरे पास अमेरिकन ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं हो सकती है ना. I think अमेरिका के मामले में the jury is still out. But I think बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे वहाँ के लेने के लिए आपको डिक्लेयर करना होता है कि आपके पास नहीं है, और आप डिक्लेयर कर देते हैं ऐसे ही वहाँ पे, और आप कह देते हैं कि नहीं है पाकिस्तान पासपोर्ट, वो तो घर में रखा हुआ है. पकड़े ना जाना भाई, पकड़े ना जाना. So we got Moonshot की बात करें. Okay, so it's not on YouTube. I'm trying to find it so I can put something up. नहीं, Moonshot का बहुत लिमिटेड सा चैनल होगा because we don't. It's a client servicing work, right? So it's not our work. So we can't really have a channel. But you don't like put your show reels up? Yeah, on we Vimeo have or something? It's more on Vimeo. Vimeo, that's It's on also. Vimeo. ठीक है. If you go on Vimeo, I'll put it up. Yeah, there's a big show reel. There's a lot of work. I would love to see because I've heard about the mechanical crane that you guys animated. Okay, I'll share that with you. And what's like, what's the type of work that they're doing there? So mostly it's content. So 3D shows, cartoons, songs, rhymes for younger kids. Because we have 2 major clients जो globally जिनके लिए हम content produce करते हैं, and then we produce the entire show. Mostly it's for YouTube. So YouTube Kids and the kids content on YouTube. Because but it's not for your own channel because you're being outsourced. No? But that's how we got the business. Somebody looked at our content and they reached out to us and they said, do you want to license it to us? LinkedIn it? There's a LinkedIn deal? This was would you believe it, COVID online conference deal. Online conference deal? Yeah. What, you're attending online conferences? So on Spaces, Twitter Spaces, or like what's the new Clubhouse? No, you paid for it. No. So there is an animation conference that happens in Malaysia. It's called MDEC. MDEC. I'm forgetting the name. MDEC something, right? Creative. MDEC Creative. MDEC is Malaysian Digital Economic Corridor. ठीक है. So वो हर साल एक शो करते हैं सितंबर में. So 2019 में we went and then we made some really good contacts, trying to look for business. Just like you go for international conferences. हाँ, सही. तो उस में तो कुछ नहीं हुआ, but अगले साल जब कोविड में था तो we had these one-on-ones, you know, like you schedule a meeting and then you meet somebody and then you pitch the idea and service. So we connected with somebody, couple of good, international clients, and we started working with them, and then it's just they liked our work, good pricing, quality, time, delivery, and then we kept on increasing. So we started with one show and then another show and then another. So we've produced more than hundreds of episodes now of original 3D kids content, and that takes a lot of effort. So more than 40 people now on the team, and day-night operations. So hiring. So almost 20 बच्चे उसमें से ऐसे हैं जो कि literally were not doing anything else. कोई बाइकिया पे बाइक चला रहा था, कोई छोटी सी दुकान में बैठा हुआ था, but they all had this dream of becoming an animator or a modeler or a rigger or something to do with like a lighting artist, comper. फिर हमने पूरे एक ट्रेनी का 3rd बैच चला रहे हैं, तो हम उन बच्चों को लाते हैं, उनको स्टाइपेंड देते हैं छोटा सा, सिखाते हैं 3 महीने तक और उनको हायर कर लेते हैं. Nice. So we have about 15 people who just got in, and then they help us also because they help us keep the margins. Because we have to be very competitive. तो एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर वैसे ग्लोबल भी रिसेशन हो रही है, तो अभी तो अफेक्ट नहीं हुआ, इतना हुआ होगा? वेल हमें नहीं अफेक्ट हुआ बिकॉज समहाउ जिस इंडस्ट्री में है, कंटेंट इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हमेशा रिसेशंस में इतना ज़्यादा हिट नहीं पड़ता, एटलीस्ट विद स्ट्रीमिंग सर्विसेज. आई बेग टू डिफर, बट एनीवेज लाइक फ्री स्ट्रीमिंग सर्विसेज. लोग यूट्यूब तो देखेंगे ना, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन छोड़ेंगे तो यूट्यूब देखेंगे ना. तो यूट्यूब वाला प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट सेल्स नहीं हो रही होंगी तो स्पॉन्सरशिप्स रुक जाएंगी यूट्यूब की. यूट्यूब पे एड्स कम हो जाएंगे, रेवेन्यू कम हो जाएगा, यस, बट लोग देखेंगे ज़्यादा टाइम, सो लॉन्गर ड्यूरेशन होगा, सीपीएम कम हो जाएगा. एडसेंस रेवेन्यू इफ दैट्स द वे इट्स हैपनिंग. बट तो ये YouTube वाला कंटेंट है हमारा. अच्छा, फिर हम कुछ ओरिजिनल
ideation भी करते हैं. So somebody just reached out to us and they want to produce a full feature film. So they want to do a short, and it's got to do sort of the visual style is Love, Death and Robots. Why did I almost hear this before it happened? Love, Death, Robots. Love it. So they gave a reference and we're like, dude, like बहुत मुश्किल है यार. बहुत मुश्किल है. Have you seen the season 3 का last episode? I saw it actually. You and Irij were talking about it on the trek. Did you see and it? I hadn't seen it then. और फिर मैं वापस आया और मैंने वो देखा. उसका क्या नाम था? वो जो बंदी वो जो something to do with silence, right? Yeah, dude, crazy है वो. Deaf आदमी के perspective से जो सुनाई हुई है. Do you know it's this demon that screams? It's CGI that looks like so real. And so that's all like GPUs, like 10 GPU इकट्ठे लगा दो SLI के अंदर NVIDIA के, like, or is it all? I mean, I don't know. It's all Unreal Engine, right? Well, Unreal, yes. And Unreal में you don't need a lot of rendering. Huh. Yeah. But you'd need like textures and like the whole nature की environment with every Unreal पत्ता. is getting Unreal's MetaHuman देखा है आपने? Just put it up. MetaHuman देखें, आपकी सोच है. You would feel that you're looking at a human, like a live human. Wow. So, and then they've created a schema. So they've created a set of different looking shapes and eyes and nose. So you can take those characters and customize, make it look like yours. Oh. Yes. So it's a skeleton basically. Well, it's a lot more than a skeleton. So they've done, like, if it looks like a normal human person, and there is enough variation in the entire sample set that they have that you can just about make any face. Oh. So they pick maybe an Asian face and then, you know, an African American. कितना बड़ा download? कितने GBs में आता है ये? You know? Unreal 5 download करो. That's where the future is. You said the word Blender. That's the pipeline. Blender and then Unreal? Well, you can do Maya and Unreal also, but that's a mixed pipeline. That's what we're trying to do. Okay. That would help us maintain sort of the crispness of Maya while capitalizing on sort of the reduced whenever someone cost. said crispness when it comes to visual fidelity now, I'm always like, there's no such thing. But you know, उसकी cinematography बड़ी crisp होती है. I'm like, यार वो super खाली crisp होते हैं जो आप खाते हो और कोई crisp नहीं है. But yeah. But you know, I'm not a technical animation. Maya's got like sharpness or like yeah, what's Maya got on Unreal? So a lot more detail. You can do texturing. You can do much better. But Unreal is catching up on. But you know, like they're more focused on super and hyper realistic. So sort of stylized content के ऊपर Unreal has a lot more catching up to do. But they're getting there. I mean, you know, like at least for mobile devices, it's pretty good. You know, because that fidelity also matters. If you wanted to see everything on the big screen, then you would invest a lot in investing original content and assets on Maya. But Avengers Endgame में Unreal use हुआ है भाई. और Unreal के ऐसे assets use होते हैं environments के which now have been used by different studios in different movies. You know, everything was so IP protected. That's why you wanted the concept artist to come in and draw the original sketches. But now they're saying कि यार ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स वाली हिल्स है ना, ये मुझे भी लगा दो और लाइसेंसिंग फी दे दो. हाँ, और थोड़ी देर में वो रॉयल्टी फ्री हो जाना है. मतलब कि यूज सो मेनी टाइम्स वो एक एसेट उसने अपनी इतना कर लिया, पूरी पैसे पूरे कर लिए होंगे तो फिर वो फ्री हो जाएगा ना. एंड अनरियल का जो स्कैनिंग लाइब्रेरी है, यू नो, थैंकफुली पाकिस्तानी टीम है, इस्लामाबाद में ऑफिस है. मैंने सुना है कि अंदरून शहर की भी कुछ जगह की हैं ये बहुत जगह की हैं. काफ़ी सारी पाकिस्तान की हिस्टोरिकल साइट्स कर रहे हैं. ओह वाओ. Quixel is the name of the company. How did that end up happening? Islamabad की team है? No, Pakistani guy moved to Europe. Quixel found key with another European. Their idea was to develop the assets that Unreal could use for games. And that picked up. Not just for Unreal, sorry. They started doing it for anyone. They just started making environments and then said, okay, whatever platform you can use it. And Unreal gave them a big project. They became very sort of big in the market, started doing Disney and Warner Brothers, and then Unreal ने कहा भाई ये बड़ा potential है, इन्हीं को खरीद लो. So they bought it. So it's now owned by Epic, which makes Unreal and Fortnite. And Fortnite, which is the biggest game. It's interesting that asset. I mean, what is an asset? Is it a prop? Is it a wall? Is it a set? All of that. Is it a and characters? And characters. That's also an Everything asset. is an asset. Like बंदा इंसान भी asset है. हाँ, but then you do characters. But then if you wanna like put the labels on, तो फिर if it's a human character, it's an animal character.
फिर you know तो उनने हसान को bipedal है. खड़ा किया और स्कैन कर लिया और अब हसान एक एसेट बन गया है, तो कोई भी हसान के इस 3D मॉडल के साथ कुछ भी करवा सकता है. But they're not doing, I think, humans, and I don't think this team is doing humans. They're doing objects and sites. So for environments, for landscape environments, and also for props in the room. And within the asset you have like things like its weight. It's like अगर कोई ball है और अगर वो plastic है, so you know it has elasticity quality. What so all it'll kinds of bounce. features, yes. ये सारी saved होती हैं asset सारी की. saved होती हैं. Texture, feel, weight, elasticity, all those things are counted. हाँ. पूरा So physics rock engine will- होता है. Physics engine है ना? Yeah. So That's a lot always of so these fascinating. VFX shots, they are done with a lot of physics engine, and then these people, they're considered a special kind of talent in the animation space. Most of them don't have a permanent jobs, they do freelance gigs because VFX shots बड़े कम आते हैं, but जो आते हैं they're highly priced. So people need to have that physics knowledge also to, you know, move water particles and then sand particles. And if you want to do, you know, show a sandstorm, so that's it's not just random pixels moving in a circle. There is, you have to define all the variables. And the physics engine keeps getting more and more CPU horsepower as generations of new processors come about, or graphic processing units come about. So you have more power, processing power at your helm to run these physics operations. Well, but you understand supposedly the equations. Like what Bikal Akbar Chaudhary was here and he's saying, you know, turbulent flow and laminar flow. Right. Like it's a physics concept, It's a right? physics concept. That's why we have turbulence in the airplane. So, you know, turbulent flow. But if you have a inefficient. चाय का अगर भाप निकल रही होती है तो वो एक टर्बुलेंट पैटर्न के अंदर चलती है. सही है. अब एक ज़माने में हम देखते थे अगर आग लग गई है किसी फिल्म में और वो एनिमेटेड आग है तो वो बड़ी पिक्सेलेटेड सी होती थी और उसकी इफेक्ट्स इतने कन्विंसिंग नहीं लगते थे. बट विद ईयर्स दैट्स गेटिंग better and easier to, like, natural looking. More crisp. More crisp is the fucking word. Sharp. It is sharper. No, it is sharper. It's more detailed. I want to say there's something. It's super crisp. कुछ तो है, वो कुछ बेहतर हुआ है. Bro, good job वाला सीन, like बेहतर हो गया. तो वो जो बेहतर चीज़ है वो कह रहा था, अकबर का ये क्लेम था कि it's not because we've got the equations of turbulent flow better. We've known these equations for a very long time. To run the numbers in at the small pixel level, it's become easier because more processing power is now available to us. It's also because the approach to calculation, which is the algorithm, those have improved. So algorithms are more optimized for the visual experience. So, you know, you have different formats for different resolution, for different screen sizes. So they actually build in these approaches or algorithms that only do just enough amount of calculation for a certain time, certain kind of output. So that way, with Unreal, it does rendering live, right? So it streams differently on a mobile phone, and on a desktop, it would stream differently. And it would allocate more resources to a bigger screen, less resources to a smaller screen. Is there a setting, like मैं गेमों में जाता ना, I go into the video settings and I go like मुझे max पे सब कुछ करना है. like, मेरा monitor सबसे अच्छा है. Anti-aliasing 16x, you know. And मैं वो गेम चाहता हूँ कि मेरे graphic processing card के through, which is a 1080 Ti right now. Okay, we have a lot of 1080 Ti. It's so old, by the way. It's a classic. 3090. Abhi, you know the Ti. Yeah. That's what we are at right now. Oh, you're at that right now. No, we can. But that's only for ray tracing better. No, it's for rendering. It's 8 times better to render the same still image that we do on a 3090 than a 1080 Ti. We have 1080 Ti. We have 10 of them. We have like 12 of them. So we love them. And you never did Bitcoin mining with it. We tried. Hash rate क्या था? बहुत ही ख्वारी है. हाँ, वो ज़्यादा इसीलिए बिके हुए थे और अभी जो GPU की मार्केट के अंदर प्राइसेस गिरना शुरू हो गई हैं वो इसीलिए बिकॉज द बिटकॉइन विंटर इज़ हैपनिंग, आई मीन द क्रिप्टो विंटर इज़ हैपनिंग करंटली. तो उसकी वजह से दीज ग्राफिक कार्ड्स आर बिकमिंग लेस इन प्राइस. सो आई स्टार्टेड लुकिंग, आई वाज लाइक मेरे भी कम काम आ रहा है, तो पैसे तो खास इतने अवेलेबल थे नहीं, लेकिन फिर भी यू नो वन गोज़ ऑनलाइन एंड आई वाज लुकिंग एट द ग्राफिक कार्ड्स. And
आधा हो गया ना, 3 लाख का जो ग्राफिक कार्ड था वो 1,50,000 का हो गया। और क्योंकि अमेरिका में भी प्राइसेस चेंज हुई हैं तो यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होंगी, तो एक पॉइंट आ रहा है कि शायद मैं अफोर्ड कर सकूँ। तो मैंने देखा कि यार 1080 Ti से मैं अगर अपग्रेड करूँगा 3080 पे, हाँ सही है, तो रे ट्रेसिंग अगर ना करूँ ना, कुछ रे ट्रेसिंग से तो फिडेलिटी इंक्रीज़ हो रही है और एक ऐसा फीचर है जो 1080 Ti पे है ही नहीं। तो रे ट्रेसिंग के अलावा फ्रेम रेट इंक्रीज़ नहीं मिल रहा भाई को। मतलब 144 हर्ट्ज स्क्रीन लगी हुई है, काउंटर स्ट्राइक जो है वो फुल मैक्स की हुई है, सब मैक्स करके उसकी नेटिव रेजोल्यूशन 4K मॉनिटर है वाइड वाला, तो फुल किया हुआ है और 120 फ्रेम्स आ रहे हैं, 144 हर्ट्ज मॉनिटर है, सो यू आर लूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ फ्रेम्स ऑन दैट एंड, बट आई डिडंट सी एनी नीड फॉर एनी अपग्रेड, you know, from the 1080 Ti, and it's a classic. And bang for buck for other graphic cards you might have had, like your 1060s, sure you can upgrade. Maybe it's time. Yeah, 1080 is like the best in one's class, right? No. 4 saal and then TIs. They're always the highest version. Yeah, you got the more gaming edition. They have the TI. So yes, we also, there was a time when we were constantly looking for like your market से 1080 Ti पकड़ो यार, कितने का एक बंदा, literally I had my IT guy, I was on his case every day. I was like भाई किधर हैं मेरे 1080 Ti's? कहते हैं सर वो एक बंदा मिला है, वो कह रहा है वो सर कसम खा रहा है कि इस पे माइनिंग नहीं हुई। मैंने कहा माइनिंग कर लो तो क्या हैक हो जाता है? नहीं, माइनिंग कर लो, कोई चेंज करना नहीं माइनिंग कर लो तो GPUs की लाइफ सपोजिटली, क्योंकि वो मैक्स पे चलता है ना, 95% पे किसी चीज़ को चलाते रखो तो लाइफ कहते हैं कम हो जाएगी। अब वो कहते हैं उसके पता भी चल जाता है एजेस पे, इफ इट्स बर्न, थर्मल पेस्ट उसका थोड़ा सा बाहर निकला होता है फैन के साथ, वो फैन भी नहीं रुकता ना। यू लुक एट द फैन, दैट्स ऑलमोस्ट वीडियो गेमिंग बिकॉज़ वो कंप्यूटर ग्राफिक्स तो हैं। हाँ, आई मीन आई थिंक, but ये भी again was not a big like 2D cartoon fan, didn't really watch much of it. Tom and Jerry, yes, but so earliest was like the things that I got up was late teens, early 20s. Not really, not much. Thundercats? Not much. Ninja Turtle? No. यार No. He-Man? No. मुझे पता ही नहीं कौन है ये लोग। नहीं पता है, सबका पता है, बट लाइक वॉच द लाइक ऐसे चलते फिरते। तो उस वक्त क्या देखा जा रहा था वो बचपने में? या बचपने में कोई बचपने एक तो आउटडोर थोड़ा सा खेल ज़्यादा था। सर यू आर वेरी गुलशन के मोहल्ले में होते थे, तो शाम में निकल जाना क्रिकेट वगैरह, तो वो 4-5 बजे का कार्टून का टाइम होता था। उस वक्त घर में शेयर्ड स्पेस भी थी, तो बड़ी बहन या भाई या अम्मी या कोई ना कोई नैपिंग चल रही होती थी, तो वो यू कैन रियली पुट द TV ऑन, सो यू वुड गो आउट, वो वाला सीन था। सो आई थिंक उस वजह से मैं वो बच्चा था जिसको अम्मी कहती थी बेटा बाहर जाके खेल तो लिया करो ना, और वो मैं कंप्यूटर एक पड़ा होता था कमरे के अंदर जिसके अंदर कनेक्ट कर रहा होता था। एंड यू आर बिकॉज ऑफ दैट, आई थिंक आई हैव अडॉप्टेड इट एट अ लेट एज नाउ बिकॉज ऑफ यू एंड साद मुनव्वर एंड सर रॉक। थोड़ी फिटनेस की तरफ भी मेरा रुझान बढ़ा है। I know, I've noticed. You surprised everyone. Gymming. Shimshal trek में, I mean the days when you wanted to go fast, you were like in the top tier team. हाँ, I wanted to go fast every day, मगर कुछ दिन ना हो पाया। But it's okay, I think. But the point is कि it was remarkable from जिस दिन सबसे लंबा ट्रैक था ना, उस दिन मैं नंबर 2 पे आया। I know. हाँ, उस दिन मैंने इतनी मेहनत डाली, मैंने कहा आज तो प्रूव कर देगा। तो पिछली सारी जलालत जो है K2 बेस कैंप पे, वो आज ही पूरी हो जाएगी। So I was trying to prove something. वो जो एक टिपिकल स्टांस होता था ना K2 में, जो स्टिक्स रख के सर नीचे like मरे पड़े होते थे। Hanging in shame is like why am I here? Yeah. But नहीं, Savio was Savio was this year's Mooroo. Savio was this year's me, and you know मैं शहजाद गौदल से आज बात कर रहा था फ़ोन पे, and he's like Savio ने कहा है कि वो कभी भी नहीं जाएगा फिर से। हाँ, कह दिया उसने। अच्छा, वो काफ़ी disturbed भी था during the process, I think, in a sense कि he just kept questioning कि यार I didn't really imagine it to be this rough. I think it was because the whole thing is विल्डरनेस है भाई, तो लाइक चलने तक तो चलो ठीक है, बट ही वाज मोर लाइक यार शाम में तो कहीं चिलिंग जगह हो ना, लाइक अच्छी हट अच्छा बनाओ, मतलब ये क्या रोज टेंट में घुस रहे हैं। तो मैं वो K2 बेस कैंप में हमारे साथ होता, और नीचे जो टेंट था उसके नीचे से ठंड आ रही होती, दैट वाज द ओनली थिंग एडेड ऑन टॉप। हाँ, बट उसको ये नहीं, उसको टेंट से भी थोड़ा सा ये था कि भाई स्लीपिंग, मतलब
कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है और Zero. इतनी मतलब वाई लाइक आई डोंट नीड टू डू दिस लाइक वाई एम आई डूइंग इट. तो दैट वे ही वाज लाइक आई विल डू समथिंग व्हिच इज सुपर लाइट एंड एंटरटेनिंग. तो अगर किसी अच्छी जगह जाना है जहाँ वॉक करके एक दिन में पहुंच गया, रात में होटल है, हॉट वाटर है, तो वो वाला भी सीन था थोड़ा सा. वेल मैं मुझे कई दफ़ा ऐसे लगा तो था कि मैं सोचूंगा ये चीज़, लेकिन मैंने नहीं सोची क्योंकि मैं इतने वो उससे गया था कि यार ये तूने यू साइंड अप फॉर इट. आई वाज जस्ट लाइक ऑलवेज टेलिंग माय सेल्फ यू डिड दिस टू योरसेल्फ. जब भी फोन पड़ी होती है कहता तूने अपने साथ किया है ये. अब तू सह अब तू इसको सह, तूने साइन अप किया है, तूने पैसे दिए, तू 2 और लौंडों को ले, उनके साथ भी यही हो रहा है अभी. यू नो एहसान एंड जमाली एक दिन लास्ट आया, इज टेलिंग मी लाइक मेरे पैर के अंदर यार मेरा जूता जो है उसकी ये, और इवन अ स्मॉल लिटिल अनॉयंस इन योर शू व्हाइल यू वॉकिंग सो मच. वो 12 जब मील चलेंगे ना उसमें, तो वो एक छोटी सी चीज़ जो है ना वो खून में तब्दील हो जाएगी, यू नो, और ब्लिस्टर्स में तब्दील हो जाएंगे बेचारों पे. एहसान तो वाज परफेक्टली फाइन. आई थिंक द हार्डेस्ट डे वाज फॉर सेकंड लास्ट डे बिफोर वी गॉट बैक. दिस आई कैन एक्चुअली पुट इनसाइड द वीडियो ऑफ द ट्रैक. वो भी बड़ा लंबा ट्रैक था क्योंकि हमने चाहते हुए में जो लेग की थी उससे ज़्यादा लेग की थी एक दिन में. सो एंड देन आई थिंक द एक finality. No. I remember you pushed for this. No, I was pushing for the whole thing. एक दिन में कर लो पूरा. I was pushing for the whole thing. We would have. पागल. यार 1 घंटे की walk थी the next day यार. Come on. If you had reached, you would have slept in your bed. तो I think वो हमें नहीं पता चल रहा होता था because we're constantly going through this and then there's this next turn. You come out of that, you're like that's the last turn. उसके बाद 3 turns और नजर आ रहे हैं distance में. तो you're like when is it gonna end? So I think same's got to do with exercise. If I'm doing an exercise, I know I'm going to end in 15 seconds. My sort of pain threshold just changed. You know, I'm like, okay, I can take a little bit more. Versus somebody who's on the other side, he's like, when is it going to end? What if it goes on for a minute? Yeah. You know, so I think that also plays in the psychology. Yeah. So I mean, I would feel like कि अभी ये ख़त्म अगर ना हुआ ना अगले इतने में तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा. अगर ये ना हुआ ना तो ये मतलब ये चल रहा होता था. और मैं कहता था एहसान खत्म आगे अच्छा एहसान वो टर्न ना एहसान आ गया तो वो मुड़ गया क्या नजर है खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा. यू नो लाइक also we had time. अगर ये ख़त्म ना हुआ ना 3 घंटे में तो फिर and I would just keep saying this over and over but I'd get there till the end and I didn't sit down. There's this one point वो साद मुनव्वर took me to तिरचमीर के बैक साइड पे हम इम्तियाज़ कैंप एक जगह फाउंड कर रहे थे for this इम्तियाज़ अली who died in an avalanche. तो on the way back I remember कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था ना and my wife had decided कि हम पूरा करेंगे. एंड एक पॉइंट पे साथ ने कहा था कि यार गाड़ी ले लेते हैं, मंगा लेता हूँ गाड़ी, कोई मसला नहीं है. नहीं करेंगे, आज नहीं होने देना. करेंगे हम गाड़ी के बगैर करेंगे. और फिर सारे वेट कर रहे हैं, सूरज गुरूब हो रहा है, पहुंचा नहीं जा रहा, स्पीड बिल्कुल स्लो है. अच्छा गाड़ी जा सकती थी. मैं बैठ गया, मैंने कहा साथ भाई you might have to get the car there. Saad fucking ran, got the car and then we went back. That was the only time I felt like कि मैंने कोई गोल सेट किया और हम पूरा नहीं कर पाए. Then that जब आप वो डिसाइड कर लेते हो एक ऑब्जेक्टिव and there is a finality to it. If you can see the finish line, yeah. You know, if you can see that you push a little extra. If you can't see the finish line, that's where so many people give up also maybe in life. Because they don't see the finish line. If you see that you know okay, whatever you know जो भी अपने गोल सेट किया है, अगर certain amount of weight lose करना है या कोई achieve करना है, तो if you can see the timeline or your progress or how well you're doing or whether you'll achieve it or not, if you're moving forward towards the finish line, then you stay on, push on. So if you see no opportunity, no help from anywhere, you're just going in the dark, I think easier to give up. Yeah. Do you have like a health ka goal or finish line that you've set for yourself? Or was that like a because you keep track of things and you're pushing towards something, you think you're going further than you just want to maintain at this point? नहीं, I think goal post change हो रहा है. हाँ, because I think जो initial goals तो exercise का मैं काफ़ी अर्से से थोड़ा सा interested रहा हूँ, but a lot of times
It was mostly to just look good, a little better. Like narcissism drove the whole thing. Basically, put on a little weight, थोड़ा सा, कपड़े सही fit हों, shoulders अच्छे लगे, because I'm thin framed. So I'm like, it'll be nice to wear clothes and feel good about myself. Initially वो यही था, late teens में, early 20s में. फिर then I stopped working out for about 10 years. Acha, this 10 years you weren't working out. I didn't know that. Yeah, 8-10 years. Hard, like there were years, 6-7 years, just no exercise room. Maybe played a little bit of squash here and there, but no exercise room. Nothing. Give up completely. Everything else became more important. फिर somehow I got into it. और उसके बाद से अब जो है ना वो goal initially ये था कि I just wanted to sort of heart rate बेहतर कर लूँ, cardio थोड़ा सा हो, और थोड़ी mobility हो, थोड़ी flexibility हो. वो होता है ना कि जोड़ों में दर्द हो रहा है. Actually मेरी knees में भी एक issue है. दोनों knees में मेरे chronic tendonitis है, मेरी left knee में arthritis है, मेरी एक surgery हुई है, तो मेरी knee में metal के piece लगे हुए हैं. And doing exercise, because you strengthening the muscle, femur और tibia के ऊपर जो muscle है, quads और hamstring, दोनों को strengthen करो तो knee पे कम pressure आता है. So if you keep those muscles strong by either doing strength training like weights के साथ या endurance training like running के साथ, तो वो मुझे बहुत दर्द होता था, वो ठीक हो गया. So that became a goal. फिर वो सही हो गया तो फिर I got into HIIT and then ये हुआ कि okay, can we do a push the heart rate to 200. 202 once. 202? Yeah, 212 is the ultimate max. Oh no. And mine shouldn't be more than 168. 168 and you hit it to 202 and 202. You felt nothing? No, वो तो बाद में देखा. Oh, okay, because you keep going. तो पता ही नहीं था. The commissioner's call always going. नहीं तो फिर वो भी एक ऐसी चीज़ है जो continued है. और then we did scuba diving, Rock and I, तो हमने वहाँ पे advance कर लिया. फिर यहाँ opportunities नहीं है पाकिस्तान में इतनी. If you want to do a little bit with the water versus mountains, you'd rather do the mountains. तो going deeper के लिए कोई इतनी opportunity नहीं थी. We got into trekking. मैंने पहले एक ट्रैक किया हुआ था, तो अब ट्रैक जब से कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ यू गाइज ऑनेस्टली इट्स द camaraderie has felt so good कि that's a mutual thing. दोबारा कर लेते हैं, थोड़ा आगे कर लेते हैं. एंड आई थिंक मिंगलिक से ना जाने की एक वजह थोड़ी सी ये भी थी. हाँ, एक थोड़ा सा लाइक फॉर मी वाज फ्यू थिंग्स. उनमें से ये भी था कि आई वाज अ लिटिल स्केयर्ड कि कहीं एवलांच के चांस तो नहीं है. देयर इज सो मच आइस, इवन दे वर सरप्राइज्ड कि जो हमारी फर्स्ट समिट थी कोसार, वहाँ पे आई ज़्यादा वी गॉट टू द समिट सो लेट 12-15, दैट्स वेरी लेट. तो ऐसा ना हो कि वहाँ पे भी इतनी हो, ये सरप्राइज़ हो जाए हम लेट पहुँचे एंड आई डोंट वांट टू रिस्क इट. तो एक वो पॉइंट था. फिर दूसरा पॉइंट ये था कि आई जस्ट डिडंट फील कि रॉक एंड सैवियो तो शुरू में कह दिया था ही नहीं जाए. मतलब तो वही कि आई sort of asked him or at least encouraged him to come कि प्लीज़ कम, you'll enjoy. अब वो भी नहीं कर रहा. उसका प्लान भी मिंगलिक सर का था बाय द वे. फिर रॉक भी नहीं. यू ऑल्सो also fell injured himself. वो भी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है. वो भी कह रहा था had so many things looking at me, don't go. फिर ये जगह इतनी ज़बरदस्त थी. I was also like, yeah, 2 days with these guys it'd be fun. We'll do something ऐसे chill. I think that's what you said over there as well. और मुझे भी यही कहा यार वैल्यू क्या करते हो आप? थोड़ा शुगल को वैल्यू करते हो ज़िंदगी में या मुशक्क़त में ही ज़िंदगी गुजारनी है? तो ऊपर जाके नीचे आओगे और फिर वापस जाओगे. मतलब वो भी रेस्ट नहीं मिलेगा ना कि आप रिकवरी कर सको थोड़ी देर बिफोर द होल जर्नी 8 दिन की वापस चलने की. सो या सेम डिसीजन ऑन द सेम wavelength with you there. No regrets whatsoever either, by the way. No regrets. Yeah. And अब ये कि मिंगलिक सर करने मानी जा रहे हैं. अगर कुछ 6,000 का किया तो विल लुक फॉर अदर ऑप्शंस. क्या था दूसरा? स्पांतिक. वो तो 7,000. ओ तेरी, वो तो अब पर जल जाएंगे. औकात से बाहर हो रहा हूँ थोड़ा सा. पर जल जाएंगे हमारे. तो आपकी ही फील्ड्स में व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? यार एजुकेशन एक, चलो ऐसे कह लेते हैं कि एक एजुकेशन की फील्ड डेवलप हो रही है, एक थोड़ा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की फील्ड डेवलप हो रही है. तो एजुकेशन में तो सैडली कोई सिल्वर लाइनिंग मुझे नहीं नज़र आ रही फॉर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड. ऑब्वियसली एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो रहे हैं ईयर बाय ईयर, प्राइवेट सेक्टर में हो रहे हैं,
मगर गवर्नमेंट सेक्टर में जिस पेस पे हो रहे हैं आई थिंक वो सस्टेनेबल नहीं है. हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्लोबल अनकम्पेटिटिवनेस requires us to educate and skill our population at a much faster rate. So given that as a sort of a criteria, हम बहुत बुरी तरह परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ मेजर सिल्वर लाइनिंग नहीं है. इट्स सेम ओल्ड रूटीन में जो इम्प्रूवमेंट या लैक ऑफ इम्प्रूवमेंट आपने देखी है, सो मे बी प्लस एंड माइनस ही होता रहेगा. So and there is no the quantum of task is also really big. Education को fix करना कि not everybody is interested in fixing education at the most important places. So there's a little bit of an elite capture, ideology maybe playing its role. So वहाँ पे sadly ऐसे ही चलता रहेगा. Obviously digital tech से ये होगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को access मिलेगा. But I think we'll still be teaching the wrong things into a new century. So curriculum pe our education will be outdated, you think? No, it's still outdated. It's still outdated. हम आर्ट्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते. हम सोशल साइंसेस को सोशल साइंसेस की तरह नहीं पढ़ाते. आपको सोशल साइंसेस मोस्ट लाइक नेशनल स्टडीज़ एंड व्हाटएवर social values your society has. We don't teach them diversity, tolerance. Those are the kinds of collaboration. That's the kind of stuff we need to teach our people. So they become better global citizens. So, you think the single national curriculum did anything beneficial? I think single national curriculum obviously a step forward है. मैंने पूरा curriculum तो scan नहीं किया, but specifically science and math में जो approach to testing है या जो targets हैं वो काफ़ी higher level thinking के हैं. So अब targets कितने test होते हैं और उनकी basis पे कितनी books publish होती हैं, that's another discussion. But in terms of raising the bar, yes, they've raised the bar. But they've raised the bar, but considering everything else, like how far we need to raise the bar, how we want to approach the whole thing, that kind of fundamental thinking वहाँ पे नहीं हो रही. Traditional improvement जो आप कह सकते हैं वो है. तैमूर रहमान की एक वीडियो आई थी जिसके अंदर he was criticizing some demagogic, this word he used, decisions that they had made. कि आपने इंस्ट्रक्शन करने की साइंस नहीं समझी हुई in that क्लास 1 की किताब है उसके अंदर टेक्स्ट साइज़ और क्लास 5 की किताब में टेक्स्ट साइज़ सेम है. They get smaller as you go along and thicker, more words packed onto one thing. Because earlier you need to visually recognize the characters earlier. So understanding what stage of development a human brain would be at in an education ki environment was something that was lacking in the single national curriculum. That's what he's right, but that's how is it a step forward? Then that's not what I'm trying to say. Which part of it was good is what I'm trying to get at. Okay, so the again, this is a very sophisticated idea. And you can find it in really good quality books that are printed abroad. और यहाँ पे भी जो लाइसेंस के साथ प्रिंट होती हैं grade 1, 2, 3 की बुक्स की अलग टेक्स्ट फॉन्ट साइज़ है आगे जाके. बट एक तो बुक पब्लिशिंग की स्टैंडर्ड्स या बुक पब्लिशिंग जो होती है वो एक अलग इंस्टीट्यूशन है. नेशनल करिकुलम काउंसिल है जो करिकुलम लिखती है. फिर मैथ एंड साइंस के ऊपर जो पॉइंट मैं रेज़ कर रहा था जो इम्प्रूवमेंट है वो है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग असेस करना और उसको इनकरेज करने पे ज़्यादा फोकस है, स्पेशली इन मैथ एंड साइंस जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत भी है टू थिंक beyond just what is but also why it is and how it is and how can we improve it. So that kind of thinking पे थोड़ा सा focus ज़्यादा है. So that way it's a little improvement. On the animation or export front, I think it's the skill of the future, or at least one of the skills. I think the sky is the limit for Pakistani. अगर मैं collective IT की भी बात कर दूँ, if you look at India or what's happened in India, how India grew compared to that, where Pakistan is, especially crypto की development हो रही है, blockchain की development हो रही है, 3.0 की development हो रही है. Everything requires a lot of video, a lot of animation, a lot of graphics, a lot of visualization. So animation industry and gaming industry, they're expected to grow cumulatively year on year more than 15 to 20%. Oh wow. So this industry would reach $300 some billion globally.
गेमिंग जिंदाबाद. So as a consumer, NVIDIA के stocks ले लो. तो from that perspective, playing field open है. पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री ने without a lot of government extra incentives काफ़ी progress दिखाई last 5 years में. I mean $2.6 billion last year थे, 3.2 this year हैं. It's expected to get to 5. तो there is that potential. Young लोग आ रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा, बच्चे कर लेते हैं. We can even train some of the guys who are not doing much into doing something that earn $300-$500 a month. And the world is moving towards gig economy. So outsourcing IT, exports and media or web, these don't require a lot of machines. In a sense, yes, computers are required, but not big factories, and people can work from home. And one computer can really become the entire office. So that way, doesn't require a lot of inputs that we may say कि we don't have, कि अच्छा जी चावल की फसल पर पानी नहीं है, या वो करना है तो बिजली नहीं है, so from या जगह नहीं है, या machinery नहीं है. And we can compete on the talent that our people have, big population. We just train them, teach them, and those are the new skills I was referring to. Okay, why I felt कि K to 5 से ज़्यादा important चीज़ क्या है? I believe ये skills हैं. वो बच्चा जो 8वीं 9वीं पास है, वो प्लम्बिंग की तरफ अब नहीं जा सकता. उसके पास मोबाइल फ़ोन है, उसके पास कंप्यूटर का एक्सेस हो सकता है, और उस बच्चे को अगर हम कोई स्किल सिखाएं तो वो ग्लोबली कंपेटिटिव हो सकता है, डॉलर्स अर्न कर सकता है. और अगर हम अगली पूरी जनरेशन को इस तरह देखें कि ओके ठीक है, डॉक्टर्स इंजीनियर्स एक सर्टन पॉपुलेशन बन रही है, बट दोज हु डिडंट हैव अ चांस, दिस कुड बी देयर चांस. And so I see a green landscape for Pakistan if we get our things in order and just continue the same journey. Same journey may be growth hai. Just don't F it up, and ideally support it a little. So we may have a greener, cleaner, more developed Pakistan before we go. Yeah, I find you very inspiring, man. And thank you so much for being on the pod. Thank you. It's been a pleasure, and आहिस्ता आहिस्ता आपसे हम फिटनेस भी सीखते रहेंगे और शायद कोई थोड़ी तालीम भी पहुंचा पाएँ आगे. इंस्पायर तो हो रहे हैं करने के लिए. और अगेन या थैंक्स फॉर बीइंग. थैंक यू फॉर होस्टिंग. इट वाज लवली. पता भी नहीं चला कब स्टार्ट हुआ.